आर्टिकल 370 की हियरिंग का आज डे 7 था। इस ऑनगोइंग बैटल के डे 7 पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखे। दवे और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए इस सेशन में हमें सुप्रीम कोर्ट बेंच से कुछ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स सुनने को मिले हैं। अपने इन रिमार्क्स में कोर्ट ने ये साफ बता दिया है that it will refrain from scrutinizing the government's decision-making process and will focus on reviewing the constitutional validity of the move. The court's examination centers on the constitutionality of the decision rather than its underlying basis. What happened in the case today? Let's have a quick look. दवे ने हियरिंग शुरू होते ही कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग इन रे द बेरोबारी यूनियन साइट की और साथ ही द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को आर्टिकल 370 की लाइट में इंटरप्रेट करने का सुझाव दिया। He said it was absolute brilliant statesmanship on their part to bring that into the constitution to assure the people of J&K that we mean what we say. So the treaty will have to be interpreted in the light of Article 370. दवे ने हाईलाइट किया कि उनके सबमिशन टू फोल्ड है। First is that the treaty Article 370 as an extension of IOA has to be interpreted in light of what the Constitution provides. And second is that if the treaty has to be amended, then it cannot be done through a legislative act, but has to be done through the exercise of constituent power. He stated, Constitution is durable. If it served a need of the hour on that day, does not mean that the need be wished away. दवे का कहना था कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की कॉन्करेंस के बिना नहीं हो सकता और इसको एब्रोगेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दवे को एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा और कहा, इफ योर आर्ग्यूमेंट इज राइट, वेयर इज द पावर टू ऑल्टर कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल? यू आर सेइंग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसोल्यूशन देयर वाज नो पावर टू मेक एनी चेंजेस pertaining to J&K at all. There has to be a logical consistency in how we interpret Articles 371, 2 and 3. दवे ने कहा कि आर्टिकल 371 के माध्यम से समय समय पर अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कई प्रोविजंस J&K में लागू नहीं किए गए थे। To this, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud says, your whole argument is that Article 370 has worked itself out, but that would be belied by constitutional practice. Because even after 1957, there were orders issued progressively modifying the constitution in relation to J&K. This means that Article 370 had continued to operate even thereafter. Therefore, it would not be correct to postulate that Article 370 achieved its life. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ रुके नहीं। उन्होंने दवे के इस आर्गुमेंट पर उनसे कहा, Your submission is that once Constituent Assembly made its decision, there was no question of invoking the proviso to Clause 3 and Article 370 becomes a permanent feature. There is one inconsistency in accepting that submission. Because if it is right, the consequence would be that once the Constituent Assembly completed its task in 1957, there could be no amendment to the Constitution at all in application to J&K under 372. This is belied not merely by constitutional practice, but the acceptance by both the state of J&K and Government of India that amendments were being made by the Constitution even after 1957 and until the disputed amendment of 2019. दवे ने कोर्ट से कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और वायलेंस के अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने और कोई रीजन स्टेट नहीं किया फॉर द एब्रोगेशन। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देश में रॉन्ग नैरेटिव है कि J&K इंडिया का पार्ट नहीं है ड्यू टू आर्टिकल 370। He says that it has always been an integral part of India. अपने आर्गुमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए he said the abrogation was an extraordinary parliamentary act. It was neither legislative nor constituent. इसी के संदर्भ में दवे ने सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स को मेंशन किया। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा, if he is inviting the court to judicially review the wisdom underlying the decision to abrogate Article 370. He inquired, are you inviting the court to review the wisdom of the decision of the government on the abrogation of Article 370? You are saying that judicial review should be reassess the basis of the government's decision that it was not in the national interest to continue Article 370. CGI ने पॉइंट आउट किया कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तक कन्फाइंड होना चाहिए। CGI को रिस्पॉन्ड करते हुए दवे ने कहा कि वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉड हुआ है एंड द प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज्ड पावर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जब दवे ने बेंच से कहा कि यूनियन गवर्नमेंट के काउंटर एफिडेविट में बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड हिम, मिस्टर दवे, डू वी रियली नीड टू लेबर ऑन द काउंटर?
We have to interpret the constitutional provision as it stands. How is this relevant? In response, Dave says, I bow down. There are no reasons available in the presidential exercise, nor are they given in the counter. Dave ने submit किया that the abrogation of Article 370 is a colorable exercise of powers since the BJP government in its 2019 manifesto had proposed the repeal of Article 370. He stated, the only reason you did it is because you told the people of the India that vote for me and I will abrogate Article 370. That shows that the power has been exercised for colorable considerations. Actual exercise is fraud with irrelevant considerations which cannot apply. इसी के साथ he concluded his arguments on the case. To keep yourself updated on Article 370 hearing, follow Law Chakra.